Good afternoon, friends. Important video on applicability of clause number 44 for tax audit purpose in form number 3CD under Income Tax Act 1961 pertaining to GST related expenditure. In clause number 44, now we have to disclose and furnish in form number 3CD first total expenditure incurred during the year. So being tax auditor, you have to identify total expenditure incurred during the year. So सबसे पहले आपको total expenditure जो relevant असेसमेंट ईयर के लिए आप फॉर्म नंबर 3CD बना रहे हैं वो आपको आइडेंटिफाई करना है. Now this total expenditure need to be bifurcated into two broad category. Expenditure related to registered entity under GST and expenditure related to entities not registered under GST. So two broad bucket need to be prepared. So first of all, total expenditure, let's say 100 rupees. It need to be then bifurcated into two components. Expenditure which is related to registered entity under GST, let's say 70 rupees. And then expenditure related to entity not registered under GST, let's say 30 rupees. So having identified this two broad category, तो यानी आपने सबसे पहले टोटल एक्सपेंडिचर निकाला, फिर दो ब्रॉड कैटेगरी में उसे डिवाइड किया. एक्सपेंडिचर जो रजिस्टर्ड एंटिटी अंडर जीएसटी है उसको एक बकेट में डाला, लेट्स से 70 रुपीज, और एक एक्सपेंडिचर जो नॉट रिलेटेड और रिलेटेड टू एंटिटीज नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी उसको एक बकेट में डाला, 30 रुपीज इक्वल टू टोटल 100 रुपीज. नाउ फर्दर expenditure related to registered entities under GST need to be bifurcated. Column number 3 and column number 3 says expenditure relating to goods or services exempted under GST. So we have to really understand what is exempted under GST. If I look at the definition of exempt supplies under section 2 subsection 47 of CGST Act, exempt supplies includes supply which is chargeable to nil rate of duty. So any supply of goods or services or both, if chargeable to nil rate of duty, nil rate of GST, then it is termed as exempt supplies. Second, which is exempted by way of exemption notification. So any supply of goods or services exempted by way of exemption notification. And third, which includes non-taxable supplies. So first of all, to identify what all goods and services are chargeable at nil rate, we have to go back to GST rate notification. For the goods, it is 1/2017. For services, it is 11/2017. And corresponding notifications are also being issued under IGST, SGST and UTGST. यानी अगर आपको वो गुड्स और सर्विसेज जो एग्जेम्प्टेड हैं, because we have to declare expenditure relating to goods or services which are exempted under GST, तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि exempted under GST का मतलब क्या हुआ. So exempt supplies जो GST में डिफाइंड है अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 47, उसमें 3 आइटम को इंक्लूड किया गया. Supply of goods or services chargeable to nil rate,
supply of goods or services which is exempted by way of exemption notification, and which are non-taxable supplies under GST. So we have to keep in our mind to find out ऐसे कौन से गुड्स एंड सर्विसेज नील रेटेड हैं, तो आपको रेट नोटिफिकेशन देखना पड़ेगा. तो यानी अगर गुड्स के लिए रेट नोटिफिकेशन देखना है तो 1/2017 अंडर सेंट्रल टैक्स रेट नोटिफिकेशन. सर्विस का देखना है तो 11/2017 सेंट्रल टैक्स रेट नोटिफिकेशन देखना है. यानी अगर आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ऐसे कौन से गुड्स एंड सर्विसेज नील रेटेड हैं, तो आपको रेट नोटिफिकेशन देखना है. एंड व्हाट ऑल एग्जेम्प्टेड बाय वे ऑफ एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन. तो अगर गुड्स का एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन आपको देखना है तो 2/2017 सेंट्रल टैक्स रेट नोटिफिकेशन, और सर्विस एग्जेम्प्टेड है अंडर जीएसटी में, देन 12/2017 सेंट्रल टैक्सेस रेट नोटिफिकेशन. Corresponding notifications are also being issued under IGST, SGST and UTGST. यानी हमने ये नोटिफिकेशन से ये आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन से गुड्स एंड सर्विसेज नील रेटेड हैं एंड कौन से गुड्स एंड सर्विसेज एग्जेम्प्टेड हैं बाय वे ऑफ एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन. Exempt supplies even include non-taxable supply under GST. So when we look at non-taxable supply under GST, then section 2 subsection 78, it says supply of goods or services or both which is not liable to GST under GST law. So GST law में ऐसे कौन से supply हैं जिस पे GST नहीं लगता. Then if we go to the chargeable section under CGST, which is section 9 or section 5 of IGST Act, clearly says excluding supply of alcoholic liquor for human consumption. यानी इसको GST से बाहर रखा. Section 9 subsection 2 read with section 5 subsection 2 of IGST Act. 5 specified petroleum products are also out of GST, and that will be included from a date to be notified. So until then these are not chargeable to GST. Crude petroleum, aviation turbine fuel, natural gas, petrol and diesel, 5 specified petroleum products not chargeable to GST. So for non-taxable supplies there are 2 items: alcoholic liquor for human consumption and 5 specified petroleum products. For disclosing, furnishing, expenditure relating to goods or services exempted, you need to identify 3 components. Nil rated by going back to rate notification, exempted by going back to exemption notification, and non-taxable supply, alcoholic liquor and 5 specified petroleum product. So expenditure which is related to registered entity under GST, now this is subcategory which is being created. Column number 3 of clause number 44. So expenditure relating to goods or services which are exempted. Now column number 4, expenditure relating to entity under composition scheme. So we all know under composition scheme under section 10 of CGST Act, there are certain composition registration is being given, and those who are taking composition dealer registration, they normally generally don't charge any GST. They don't raise any tax invoice. They only raise bill of supply, and in their bill of supply they declare also that they are registered as a composition dealer. So you have to really find out the number pertaining to expenditure relating to entities who are registered as a composition dealer, and this fact, this number
need to be disclosed in column 4 of clause 44 of form number 3CD. Then clause number 5, important one. And clause number 5 says expenditure which is related to other registered entities. So from a main bucket, expenditure relating to registered entity, we have created 3 subcategory. One which is for goods and services, which is exempted under GST, clause 3. Clause 4, expenditure related to entities registered as a composition dealer, composition scheme. And now column 5 clearly saying that expenditure to all other registered entities, meaning thereby for column 5 we are availing credit, ITC, GST input tax credit. So column 5 will contain all expenditure relating to other registered entity. And column 6 is saying total payment to registered entity. So which is sum total of column 3, column 4 and column 5. So column 6 is creating total payment to registered entities. Column 7, that expenditure relating to entities not registered under GST. So these are the broad column under clause 44 to be filled up while doing the tax audit in form number 3CD. So this you need to keep to your mind, how to dig the data, fact and numbers which you need to disclose. There are certain open queries in the market, and let me take those queries and resolve one by one. Do we require to show expenditure each and every head-wise or total expenditure? First dispute, मुझे each and every head-wise expenditure दिखाना है या total expenditure दिखाना है? अगर आप हेडिंग देखेंगे ना जो क्लॉज 44 में डाली गई है, it is talking about total expenditure. So you need not require to bifurcate into each and every head. It is total expenditure, and that need to be disclosed. First part. Second part, whether it is only revenue expenditure or capital expenditure also. यानी आपको रेवेन्यू एंड कैपिटल दोनों एक्सपेंडिचर को लेना है या सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को लेना है? आंसर इज इट इज एक्सपेंडिचर. इट मे बी रेवेन्यू, इट मे बी कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी दोनों को आपको लेके चलना है. सेकंड पार्ट मैंने आपका क्लियर किया. थर्ड, कई बार हम अपने पीएल अकाउंट में प्रोविजन करते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, बैड डेट, प्रोविजन एंट्री पास करते हैं. बट आर दीज प्रोविजन आर एक्सपेंडिचर? बी केयरफुल. मैंने कहा है एक्सपेंडिचर, मैंने प्रोविजन की बात नहीं की. टू माई माइंड आपको एक्सपेंडिचर कैप्चर करना है. तो एज ए ऑडिटी और एज ए टैक्स ऑडिटर आपको क्या देखना है? जो आपकी इनवर्ड सप्लाई है, इनवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम रजिस्टर्ड एंटिटी और नॉन रजिस्टर्ड एंटिटी. अगर रजिस्टर्ड एंटिटी है तो फिर उसको बाइफरकेट करना है कि गुड्स एंड सर्विसेज एग्जेम्प्टेड या आपने कॉम्पोजिशन डीलर से लिया, एंड देन बैलेंस जो आपने रजिस्टर्ड एंटिटी से लिया. कॉलम 3, 4 एंड 5 उसका सम टोटल कर दिया, और एक आपका बकेट बना जो आपने अनरजिस्टर्ड एंटिटी नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी. ये वाली बात मैंने आपको बता दी. अब मैं एक और प्रॉब्लम जो बहुत ह्यू एंड क्राई है कि क्लॉज 44 की जो एप्लीकेबिलिटी है जीएसटी पर्सपेक्टिव फॉर्म नंबर 3CD में कब से एप्लीकेबल है और किस साल के लिए एप्लीकेबल है.
So any form number 3CD which is issued after 31st March 2022 यानी 31 मार्च 2022 के बाद अगर फॉर्म नंबर 3CD इशूड एंड साइंड है तो आपको एक क्लॉज 44 की जो कॉम्प्लायंसेस हैं फ्रॉम जीएसटी पर्सपेक्टिव आपको फुलफिल करने पड़ेंगे। मीनिंग देयर बाय, मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर 2021 2021 का फॉर्म 3CD आप आफ्टर 31 मार्च 2022 के बाद इशू करते हैं तो क्या आपके लिए एप्लीकेबल होगा? आंसर इज यस। यानी कोई भी 3CD आफ्टर 31 मार्च 2022 के बाद अगर आपने इशू किया है तो आपको ये क्लॉज 44 की जो कॉम्प्लायंसेस हैं इन फॉर्म नंबर 3CD आपको फुलफिल करने पड़ेंगे। सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट विच यू मस्ट नो। कुछ और क्वेरीज हैं जो इसको मैं कवर कर लेता हूं। ये जो टैक्स ऑडिट की रिक्वायरमेंट है, एक क्यूआर पेन है या क्यूआर जीएसटी नंबर है। यू मे हैव 4 GST रजिस्ट्रेशन एंड द सेम पैन नंबर, पर टैक्स ऑडिट रिपोर्ट तो एक ही जाती है ना। तो क्यूआर पैन होगा या क्यूआर जीएसटी नंबर होगा? एंड आंसर इज क्यूआर पैन नंबर होगा, परमानेंट अकाउंट नंबर, जीएसटी वाइज नहीं होगा। जब मैंने इस क्वेश्चन को लिया तो एक और क्वेश्चन, when we are supplying goods or services between distinct person and the same PAN number, so यानी मैंने 4 रजिस्ट्रेशन अपने एक पैन पे लिए हुए हैं और जब मैं सप्लाई करता हूं फ्रॉम वन रजिस्ट्रेशन टू अनदर रजिस्ट्रेशन, दैट इज सप्लाई। जीएसटी पर्सपेक्टिव में उसको सप्लाई माना जाता है, स्टॉक ट्रांसफर ऑफ गुड्स सप्लाई माना जाता है, बट क्या एक्चुअली सेल हुआ? दैट्स व्हाट वी आर लुकिंग टू। तो किसी के लिए वो इनवर्ड होगा, किसी यूनिट के लिए वो जो रिसिपिएंट यूनिट होगी वो इनवर्ड होगा और जो स्टॉक ट्रांसफर कर रहा होगा उसके लिए आउटवर्ड होगा। तो मैंने क्या कहा है, आपको कैप्चर करना है अपना इनवर्ड, पर ये बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन एंड द सेम पैन नंबर, तो क्या इसको कैप्चर करना है? क्योंकि ये नेट ऑफ हो जाता है। जब हम परमानेंट अकाउंट नंबर के बेसिस पे करेंगे तो ये नेट ऑफ हो जाता है। तो जैसा मैंने कहा ये क्यूआर पैन है, परमानेंट अकाउंट नंबर है, यानी नेट ऑफ होके जो नेट एंट्री आएगी और वो एक्सपेंडिचर की एंट्री फ्रॉम रजिस्टर्ड एंटिटी और नॉन रजिस्टर्ड एंटिटी वो आपको कैप्चर करनी है। कई ट्रांजैक्शन हैं जो आपके एक्सपेंडिचर होते हैं पीएल अकाउंट में, लाइक सैलरी, रीइंबर्समेंट पेड टू द एम्प्लॉय कंसर्न, डेबिट साइड एक्सपेंडिचर है, बट क्या इसको डिस्क्लोज करना है? शेड्यूल 3 है जीएसटी के अंदर एंड शेड्यूल 3 सेज नाइदर ए सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज, मीनिंग देयर बाय यानी जो शेड्यूल 3 में जिनको हमने सप्लाई माना ही नहीं उस एक्सपेंडिचर को आपको डिक्लेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। यू नीड नॉट रिक्वायर टू डिक्लेयर सच एक्सपेंडिचर। सो जो जीएसटी में सप्लाई है, एक्सपेंडिचर है, आइदर टू रजिस्टर्ड एंटिटी और नॉन रजिस्टर्ड एंटिटी, आपको वही कैप्चर करना है। सो दैट इज द नेक्स्ट क्लैरिटी विच आई गिवन टू यू। एक और क्वेरी जो आती है कि मान लीजिए आपका ऑडिटी जिसकी आप ऑडिट कर रहे हैं, क्या वो जीएसटी में रजिस्टर्ड होना चाहिए? ये रिक्वायरमेंट है क्या? वेदर ऑडिटी नीड टू बी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी? जैसा मैंने कहा आपसे, आपको परचेज की ट्रांजैक्शन देखनी है, इनवर्ड सप्लाई देखनी है जो आपने रजिस्टर्ड एंटिटी और नॉन रजिस्टर्ड एंटिटी से ली है। आपका ऑडिटी जीएसटी में रजिस्टर्ड है या नहीं है, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। For this compliances of clause number 44 for tax audit purpose in form number 3CD as per Income Tax Act 1961. So I have tried my best from GST perspective. What are the requirement in clause number 44 for filling up in form number 3CD? I have tried my best and given the answers to the
all probable queries, which is as on date, we all are looking for the answer. Thanks for watching. Stay tuned. Thank you very much.